Well, I think as it says it on itself that it's Millennial Award. So I think it'll be a lot of fun. There'll be a lot of young energy inside, and Grazia itself is a very fun magazine. So I think I'm expecting a lot of fun. Well, I'm wearing a pantsuit. I've been styled by my stylist Devraj Das, and it's a bit different. It's not like normally when I wear pantsuits, they're always in one color. This is like made out of brocade, and it's a deep color. So yeah, I'm enjoying wearing it. I have just my one film, which is Power, that's releasing very soon, and I'm starting another web series, so that will be out. I mean, I'm going to start shooting for it. Another one, yes. It's a drama. Yeah. Not started. It's starting in July. Yeah. मैं इनफैक्ट आज ही योगा करके आई हूँ एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय योगा इंस्ट्रक्टर हर नेम इज़ अंशुका she's fantastic and I was telling her that how yoga is just has been life changing for me and I think everyone must do yoga because I think it keeps you like energized and the stretches and all are it's just the healthiest form of exercise ever. You. I'm very good. I'm very good. You were busy on your phone. It's okay. I'm sure there's a lot of talent in this room that I'm really excited to look at and then support them and be there for their happiness tonight. Yeah. Yes, I'm doing a couple of web shows. One is for Woot, one is for Applause. They're going to come out really soon, and yeah, that's that. My beautiful outfit is by my sister stylist who's gotten me this, Karishma Gulati, and it's a kind of a blazer thing happening with a manly thing but a very womanly touch to it. So, yeah. Yes, yes. Yes, my mother is a yoga teacher. She forces me to do yoga all the time. Yeah. Yes. Thank you.
just ask me about Grazia. First of all, congratulations to Grazia. I think there's been a longer association with them, and now they're doing this. I recently did a cover with them where it was all about no distortion, digital distortion, no touch-up. तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पिरेशनल है. So yeah, I just want to congratulate them. हाँ. हाँ. वो प्रमोशन का टाइम आएगा ना तब बताती हूँ मैं. अरे नहीं बता सकती मेरे दोस्त. अरे मेरा डायरेक्टर याद आ रहा है, मेरे दिमाग में डायरेक्टर आ रहा है कि क्या बोलेगा मुझे अगर मैं बताऊँ. सब. जी. मैं योगा घर पे करती हूँ, वो हर रोज करती हूँ. कुछ नहीं, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे दिमागी हालत ठीक रहती है. थैंक यू. हाय अरुण. कुछ नहीं. I'm glad that Grazia has kept this. This is their first awards, and I hope that this is just the first, and there are many more to come. It's celebrating, work and art. So I'm just happy here to be here, and I'm hoping to have a great time. Thank you. Well, this has been made by Seema Khan. My stylist Yasmin Qureshi has, looked out for it and styled me. And I'm having a great time wearing it. I'm in love with such flowery prints, and the work's done is very elegant. So मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे पहनने में. नहीं, टाइगर जिंदा है नहीं है. It's another film. मैं अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती. I'm not allowed to, but it will come out very soon this year. And please देखिएगा. ओ आ जाइए. जी. हाँ. कौन सी सर? नहीं देखी, इन्होंने देखी. देखी और ये पहली बार हम किसी इवेंट पे साथ में आ रहे हैं, रेड कार्पेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये कुछ नया है. तो वी आर एंजॉयिंग, और आप सबका प्यार मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है. जी. जी. नहीं, इट्स गुड. ये हम मिलेनियल्स को रिकग्निशन देने के लिए ये अवार्ड रखा गया है. सो इट्स गुड, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, एंड मज़ा आएगा आज देखिए. हम तो चाहेंगे साथ में फिल्म करना. अब कोई बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देख लें हमें साथ में उनकी विजन में, और पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो विल ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर इट.
मैं तो इन्हें फिर भी अपने बड़े भाई की तरह ही देखता हूँ, मतलब दैट वो अनअफेक्टेड रहती है, बट गॉड्स बिन रियली काइंड कि डे बाय डे पॉपुलर हो रहे हैं. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हाँ जी. देखिए कोई खासा प्लानिंग तो नहीं है. एक आप कहानी पढ़ते हैं, आपको दिल को छूती है, डायरेक्टर अच्छे होते हैं. आई एम बीन वेरी लकी टू गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. सो उससे मेरी भी ग्रोथ होती है एज एन एक्टर. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. हाँ जी. कुछ नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे फिल्म को, अपनी पूरी मेहनत करेंगे. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी टू बी टोल्ड about a lesser known revolutionary Udham Singh, and it's my dream come true to be working with Sujit Sarkar, so I'm really looking forward to it. Thank you. Thank you. Come. Yeah, one picture.